Morning, everybody. Good morning, sir. Morning. Okay, uh, let's proceed ahead. Today we'll start with two targets. So, whatever we were doing earlier with one target, now we'll be doing with two targets. Okay. All right, two targets. There's a target Charlie and there's a target Delta. So, ownership course WO is 240 degrees true divided by 15 knots in RV. There is a target Charlie and there is a target Delta. $1,000. Target Charlie is 314 degrees true and 11.9. Delta is 208 and a half, 10 miles. Then 10, 12 is 314, 8.3 and 211, 5.1. Okay, write the question now. Master of ownership. Master of ownership desires to take action at 1016. So action is at 1016 by means of a single alteration of course, a single alteration of course, or reduction in speed, so that the CPA of either target will be not less than 2 miles. Evaluate the possible alternatives. State which action is most preferred and why. सर इवैल्यूएट के बाद रिपीट करना. Evaluate the possible alternatives. State which action is most preferred and why. Okay, start the question, make the two triangles. You'll have to work at double the speed now. Scale number 3 to use.
Excuse me, sir. Yes, please. Yes, sir. Sir, can you just confirm WO once again, sir? Can I confirm what? WO, sir. WO. Yes. The WO ownership course is 240, 15 knots in RV. सर ये जो हम पी की इंटरपोलेशन करते हैं ये शीट पे दिखानी है सर? नहीं, ये नहीं दिखा। ओके, बस हम सीधा अपने आप पे डिस्टेंस लेके कट कर दें उधर। एब्सोल्युटली। ओके सर। शीट पे आप वही चीजें दिखाओगे जो मैं आपको यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड में दिखा रहा हूँ, ये सारा शीट पे जाएगा। ओके सर, ओके। Let me know when you are ready. Ready, sir. Okay. So basically, let's describe the situation first. क्या है, हो क्या रहा है? We are at Charlie, heading 240. Right? We are in RV. We have got one target, Delta, which is on our port side, and which is going to pass ahead of us by a very narrow CPA. Then we've got another target, Charlie, which is on our starboard side, and उसके साथ CPA हमारा 0 है. ROR says that in RV, Rule 19 applies. As per that, any target forward of the beam, I shall not alter course to port, other than for a vessel being overtaken. That if I am overtaking a vessel, then I can. Other than that, I cannot. So therefore, I can only alter course to starboard. Is everybody agreeing to this statement, whatever I am making? Yes. So port alteration is not allowed. सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? The targets are all forward of my beam. Rule 19 prohibits me from altering course to port. Yes, sir. So I can only alter course to starboard. Yes. Okay. So option number 2, you will write down not permitted as per
ROR because of, now you start writing everything over here. So you quote rule 19 का relevant part, delta 1 and delta 2, you quote that. And then you say it is not permitted. I can only alter course to starboard. And here the targets are all forward of my beam, both of them. That's why. Now we come to option number 1, alteration of course to starboard. Now, when delta alters course, for delta, when I'll alter course to starboard, WO will become WO1. Then O1A will go like this. And if O1A will go like this, the tangent will go like this to the south of the circle. सर एक बार दोबारा वर्किंग बताना. When own ship has to alter course to starboard, WO will become WO1. WO will have to become WO1. If WO1 is like this, then O1A will be like this. If O1A is like this, the tangent will be like this. That means the tangent will be coming to the south of the circle. Now let's go to Charlie. If WO alters course to starboard, become WO1, then O1A will become like this. The tangent will become like this, to this side of the circle. That means to the west of the circle. Yes, sir. Okay. Now the question is, how to decide for whom should I alter course? That means out of these two chaps, Charlie and Delta, there is one chap who is a bad guy. And there is one chap who is a good guy. Good guy is that chap who will touch the circle first, who will become a tangent early. He's a good guy. Bad guy is that guy for whom I have to alter more, so that the good guy is already taken care of. I have to decide which out of Charlie or Delta is a bad guy. Delta. Whom a larger alteration is required. Delta. Does everybody agree Delta is a bad guy? जिसके लिए मुझे ज्यादा ऑल्ट्रेशन करनी पड़े वो बैड गाय है, जिसके लिए मुझे कम ऑल्ट्रेशन करनी पड़े वो गुड गाय है. किसके लिए मुझे ज्यादा ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी? ही इज अ बैड गाय. डेल्टा. डेल्टा के लिए ज्यादा करनी. तो सर वो पास उसकी स्पीड भी ज्यादा है एंड इज क्रॉसिंग आउट हेड ऑफ अस, उसको पीछे लेना है एंड पास में भी है तो ज्यादा अल्टर करना पड़ेगा. So Delta is the bad guy. We are agreeing on that. So therefore I will start my tangent drawing for Delta. So therefore for Delta I draw my tangent. So now I have to transfer En backward
through A. So put your roller ruler PN, transfer it backward through A. Draw a parallel line. Next, speed of one ship is the same. So radius as WO, cut an arc. Call it as O1. Join WO1. Then WO1 is the new course alteration. 317 है आंसर. अच्छा 321 है. ठीक है, that's fine. So you'll write down over here because larger alteration of course for delta is required. Hence, we draw tangent for delta. Therefore, new course WO1 for delta is equal to whatever course you're getting. My answer is 317, so I'm just writing that. 317 degrees true. That is alteration of course 77 degrees to starboard. Okay, having drawn this, now we have whatever we have done here, we have to do it on Charlie also and show that. So draw WO1 equal to 317 on Charlie. Speed is the same, so WO equal to WO1. Join O1A. Please remember nomenclature remains the same. Sir, what remains the same? Nomenclature. जो नेमिंग करते हो यहाँ पे वही नेम वहां पे भी वही रहना चाहिए. जो यहाँ पे नेम कर रहे हो एब्रीविएशन ले रहे हो वो जो डेल्टा में है वो चार्ली में भी होने चाहिए सेम. अरे डेल्टा का WO1 को हमने ट्रांसफर किया ना सर ये चार्ली पे. या डेल्टा जो हमारा न्यू कोर्स है 317 वो चार्ली पे ट्रांसफर किया है. या फिर नया कोर्स ले सकते हो 317 एंड वहां से ट्रांसफर कर सकते हो. ट्रांसफर इसमें वो W को रेडियस रख के एंड W से हम लोगों ने O1 मार दिया ना. दैट्स राइट, बिकॉज़ स्पीड इज द सेम. यस. ट्रांसफर O1A थ्रू P. Transfer O1A through P. So CPA 3 miles. That doesn't matter. We don't have to measure it. Since it is going outside the circle, we have chosen the correct bad guy. So we'll just write down
CPA for Charlie is greater than 2 miles. CPA for Delta is equal to 2 miles. सर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है चार्ली के लिए थ्रू पी, उसको ऐसे ही छोड़ देना। उसको ऐसे ही छोड़ देना, ये टेंजेंट नहीं है, it is just a relative line of approach. It is not a tangent. Okay. Option number 3, reduction of speed. For reduction of speed, we need to check the good guy, bad guy again. For reduction of speed, separate check need to be done. So calculate the original TCPA for Charlie. Calculate the original TCPA for Charlie. Will be 10-16 plus distance to go PC over OA into 12 minutes. The original TCPA. Now forget about the alteration of course. Now we are only looking at reduction of speed. And we are trying to calculate the original TCPA of Charlie. So the collision for Charlie will occur at 10:40 collision. Yes, sir, same as. Okay. Now calculate the original TCPA for Delta. Okay. Original TCPA for Delta is in 1 year original CPA. So 10-16 plus PN1 upon OA into 12 minutes. $24. So the original TCPA of Delta is happening earlier than original TCPA. TCPA of Delta is happening earlier than TCPA of Charlie. Therefore, larger reduction of speed is required for Delta
than Charlie. मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज ये मेरे पास जल्दी आ रहा है, इसकी रिलेटिव स्पीड बहुत तेज है एज कंपेयर टू चार्ली. दैट विल हैपन लेटर, दिस विल हैपन अर्लियर. सो मुझे डेल्टा के लिए स्पीड रिड्यूस जल्दी करनी पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी. So if while remaining on the same course as WO, if I'm going to reduce my speed to WO2, then my line of approach will become O2A. If my line of approach will become O2A, that means my tangent should be on the north of the circle. Agreed? यस नहीं सर. एक बार बता दोगे सर. If I am on WO and I have to reduce my speed to WO2, then if O2 is going to lie somewhere here, my relative line of approach will become O2A like this. If O2A will become like this, my tangent will be on this side, north of the circle. Yes sir. Right. So that's what I'm saying. So I draw the tangent this time for delta to the north of the circle. सर इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर मैं स्पीड स्लो कर रहा हूँ तो टारगेट आगे से ही जाएगा. That's right. बिल्कुल ठीक. That is also another interpretation of the same thing. Call this as N2. Transfer PN2 backward through A. Wherever it cuts WO, all that point as O2. Then WO2 for delta is the reduced speed. It becomes 2 knots. So speed half किया था? नहीं, ये तो मैंने ऐसी अप्रोक्सी बना दिया है. आपको तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. 1 आ रहा. 1 knot. Yes, 1 knot आ रहा. How much Yes, is sir, your 1 knot. drift कितनी आ रही है? 1.5 आ रहा है सर. ठीक है, whatever you're getting. Basically, the whatever distance WO2 is there, that is for 12 minutes. So 60 minutes के लिए कितना होगा? So now you have to superimpose this speed onto Charlie. सर ये बात बताना सर, ये जो WO2 स्पीड ली आपने, दैट स्पीड यू हैव टेकन फॉर 12 मिनट्स या फिर फॉर कैलकुलेटेड फॉर 1 आवर? भाई 12 मिनट में इतना डिस्टेंस है तो 60 मिनट में कितना होगा? अच्छा, आपने 60 मिनट वाला डिस्टेंस लिया. ओके सर. बारह मिनट में मैं WO2 करता हूँ डिस्टेंस, तो 60 मिनट्स में मैं कितना करूंगा? वो मेरी स्पीड होगी ना.
सर 2.2 आ रहा है सर। ठीक है, that's fine. Now superimpose WO2 distance over here onto Charlie. Superimpose WO2 distance onto Charlie. Join O2A on Charlie. And transfer through P. और वो और बाहर से जाएगा. Which is what we wanted to show. CPA for delta is equal to 2 miles. CPA for Charlie is greater than 2 miles. तो जो भी नया कोर्स था वो यहाँ पे WO1 बना दिया हमने. बेसिकली जो डेल्टा में हमने किया था उसी को सुपर इम्पोज कर रहे हैं चार्ली में. सो WO1 इधर जो डेल्टा का था उसको इधर में ट्रांसफर कर दिया, फिर O1A बना दिया और P के थ्रू ट्रांसफर कर दिया और वो 2 माइल के बाहर से जा रहा है. ओके सर. Last part of the question. Between number 1 and number 3, which one would you prefer and why? 1. So हमने जो लास्ट टाइम जो लिखे थे सारे पॉइंट्स, वो जो ऑप्शन था ऑल्टरेशन ऑफ कोर्स वर्सेस रिडक्शन ऑफ स्पीड वाला, वो सारे पॉइंट्स लिख देना. 8 पॉइंट जो लिखे थे, 7-8 पॉइंट जो लिखे थे हमने. So you will prefer alteration of course because of following reasons: instantaneous, readily visible, prudent, more starboard side prudent, clear. practical, starboard side clear, as per ROR says so, results in instant increase of CPA and no loss of maneuverability. वो सारे पॉइंट्स लिख देना इसमें. वो आखिरी पॉइंट है, वो आखिरी उसका है. Good seamanship. वो सारे बस this thing. So that is how it is. You got to write that. ठीक है. These type of questions come in the exams. और अभी हमने 2 की किए हैं, अभी 3 का भी करना है. So they take time. So just summarizing the whole thing once again. The crux of this whole question is based on good guy, bad guy. Okay. Alteration of course. How to identify the bad guy? वो टारगेट जिसके लिए CPA एंगुलर रेडियस जो है, जो CPA की एंगुलर रेडियस थी वो ज्यादा है, वो बैड गाय है. ठीक है. इसकी ओरिजिनल CPA 0 था, इसको टेंजेंट बनने के लिए एंगुलर रेडियस 2 माइल्स की इसको ट्रैवल करनी पड़ती. इसकी पहले ये एंगुलर रेडियस 2 माइल प्लस x, इसको पहले 0 पे जाता, फिर 2 माइल शुरू करता अपना. तो इसकी CPA एंगुलर रेडियस 2 प्लस x. सिंस इसकी एंगुलर रेडियस ज्यादा है, देयरफॉर ये बैड गाय है. समझ में आ गया? Yes sir, समझ गया. So
फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स जिसका एंगुलर रेडियस ज्यादा ट्रेवल करेगा, सीपीए की आर्क, वो बैड गाय है, उसको लिए मुझे टेंजेंट बनाना है। अगर मैं बैड गाय के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो गुड गाय इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। तो ये हो गया पहला, ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स। रिडक्शन ऑफ स्पीड, ऑलवेज कैलकुलेट द टीसीपीए, ओरिजिनल टीसीपीए। जिसका टीसीपीए कम है, यानी कि वो मेरे पास जल्दी आ रहा है, वो बैठ गए, उसके लिए मुझे स्पीड रिड्यूस ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इज दैट ओके? डज इट मेक सेंस? यस। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी सारा इसी का खेल है। ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, रिडक्शन ऑफ स्पीड, गुड गाय बैड गाय। आंसर में गुड गाय बैड गाय नहीं लिखोगे आप प्लीज, आंसर में ये सब नहीं लिखना है, गुड गाय बैड गाय। दिस इज ओनली टू रिमेंबर, याद गुड करने वेसल, के लिए। गुड वेसल, बैड वेसल सर। ये सब कुछ नहीं लिखना है, गुड वेसल बैड वेसल नहीं लिखना है। एग्जामिनर्स डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस लिंगो। लार्जर ऑल्ट्रेशन, स्मॉलर ऑल्ट्रेशन, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड टू यूज। बट गुड गाय बैड गाय इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड, ये तो हमारी क्लास का तकिया कलाम है। बिकॉज वन ऑफ द गाइज वाज टेलिंग मी, सर ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, तो कुछ और तरीका बताओ, ये वो। तो उस वक्त क्लास में निकल आया गुंडा, नॉट गुंडा, वो सब शुरू हुआ। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। क्वेश्चन ग्रोवर। So that is how the whole thing originated. The origin of good guy and bad guy is that. So, but please don't write it. That's what I'm still getting guys who write this. So don't write it. That's not the right answer. So you have to write. या तो लिख दो कि larger alteration, vessel for larger alteration, smaller alteration. That is acceptable. That is okay. ठीक है, please revise the question thoroughly as we move ahead. All right. क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा कि प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट। ऑलराइट, सी यू देन, बाय एवरीबॉडी। हाउ डू यू रीड मी? Loud and clear. Okay. All right. Let's come to 3 targets. Okay. So we have 3 targets. WO is 122. 15 knots in RV. Boy X-ray. Target Yankee. Target Zulu. Zero 300 hours. And 03 12 hours. 113 8.2 miles. 108 5.3 miles. 162 10.2 miles. 159 7.4 miles.
201, 10.3 miles, and 201, 8.1 miles. These are the bearings and ranges of the three targets. Let me know when you're ready to write the question. Sir, ready. Okay. So write down first part of the question. When boy X-ray is abeam, So when boy X-ray is abeam. When boy X-ray is abeam, the next course to steer for navigational purposes. The next course to steer for navigational purposes is 140 degrees true. So please, 142. 140 degrees true. The next course to steer is 140 degrees true. If own ship's master does not want any ship, if own ship's master does not want any ship to pass less than 1 mile off, does this alteration of course resolve the situation? Resolve the situation. Does this alteration of course resolve the situation? There's a second part to the question that I will tell you later once you do the question. So start the question, start making the triangles, and you'll have to do it at a very fast pace because there are three targets now. Try to time yourself. How much time do you take? सर टारगेट जुलू के लिए सेकंड रेंज एंड बेरिंग है जो 8.1 है सर. That's right. 201 8.1. Okay sir.
सर टारगेट सेट का सेकंड बेयरिंग 201 था ना? That's right. Constant bearing.
ये एक्स पे एरोस कैसे मारेंगे सर, जैसे अगर डब्ल्यू ए पे कंसाइड कर जाता है? Nothing. So I just want to know, is W and A coinciding? Yes sir, it is coinciding. बस ठीक है. Just Yes, leave sir. it. Coinciding, sir. Okay. So just leave it like that. No need to put any arrows there. Because it's a stationary target. So therefore you can just afford to leave it. Now the CPA desired is 1 mile. So draw a goal chakkar of 1 mile. All right. The next the question says, when boy X-ray is a beam. So question is, when will boy X-ray be a beam? So what is the beam bearing 90 degree. of X-ray? What will be the beam bearing of boy X-ray? So 120 plus 2 1 Correct. 2 212. So my own course is 122 plus minus 90 will be the beam bearing. My own course WO and plus minus 90 is the beam bearing. Agreed? So the beam bearing. Yes sir, agree. So beam bearing of X-ray will be 032. Is it okay? Yes, sir. All right. So at Charlie, put a ruler at 032 and draw a dotted line. This is my 032 line. This is my beam bearing line. That means अगर मैं 122 पे ऐसे हेड कर रहा हूँ तो ये लाइन मेरा 90 डिग्री एंगल बना रही है मेरे शिफ्ट साइड से. ये कहने का मतलब है. So let this connect at the line of approach of X-ray at a point P. Find time at P. Find time at P. That will be equal to this will be the time at P. Yes, sir. हाँ जी. आ गया. So 332. Is that okay with everybody? Yes.
सबका 332 है? Yes, 33 है. 33 आ रहा है सर, 32 सर. 32, 33, 30, 31, whatever is okay. How you show the formula, that is more important, and how what values you put here, that is, ये formula ज़्यादा important है. सबसे ज़्यादा तो important formula है. So as examiners, first thing that I look at is the formula. अगर formula लिखा है तो then I know the person has done this thing of calculation. All right. At 332, what will be the position of Yankee and Zulu? So predict position P for Yankee and Zulu. Predict position P for Yankee and Zulu. At their respective rates of approach. That means Yankee अगर 12 मिनट में OA करता है तो 20 मिनट में कितना करेगा? Similarly, Zulu. Okay. The next course to steer is 140 degrees true. So draw WO1 140. On Yankee. Similarly on Zulu. Speed is the same. So distance as WO, cut an arc. Call this as O1. Call this as O1. Join O1A. सर W1 किसके पैरेलल मारा सर? By the new course of the own ship Okay, is sir. given as 140. Okay. Transfer O1A through P. Forward transfers are all through P. So वो और बाहर से चला जाएगा. Call this as N. Sir, please repeat, sir. She asked. कहाँ से? कौन सी जगह से रिपीट करूं? Which point? सर अभी WO1 बना दिया वो यंकी और जुलू का. हाँ, WO1 बना दिया और join O1A for Yankee and transfer it forward through Papa.
सर ये n हम लोगों ने जो एक्सरे की लाइन ऑफ अप्रोच है उसको देना है जहाँ पे इंटरसेक्ट करे। नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ये तो खाली जस्ट टू इंडिकेट कि ये पीएन लाइन है, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है रैंडम, कोई पॉइंट नहीं है ये। ओके सर। नाउ डू द सेम थिंग फॉर जुलू। जुलू का 1 नॉटिकल माइल कम से जा रहा है। कम से जा रहा है सबका? ये सर कम है। कम है, तो सर्कल के अंदर से जा रहा है। Is everybody Yes, getting it? अंदर से यार। सबका Yes, अंदर से जा रहा है। Okay. Now you answer the question. जो क्वेश्चन पूछा गया है। Now you read the question once again. नेगेटिव्स रिजॉल्व नहीं करता। Correct. So you'll write down now. No, this alteration of course 140 degrees true does not resolve the situation. Is that okay? As Zulu CPA is less than 1 mile. As CPA of Zulu is less than 1 mile. Is that all right? यस सर। सर हमें सीपीए लेस देन 1 माइल बताया, हमें ये भी बताना कितना है। हाँ, रीजन कितना है ये नहीं, लेस देन 1 माइल बता रहा हूँ, क्योंकि क्यों रिजॉल्व नहीं करता है ये बता रहा हूँ। Next question. Now you write down the second part of the question. So second part of the question is, if not, what alteration of course would be suitable from ROR and navigation point of view? सर इसमें अगर हम सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करें पी पे, देन उसे बैकवर्ड ए पे ट्रांसफर कर दें तो आ जाएगा। दोबारा बोलो। सर if we draw tangent from circle at 1 nautical mile circle to P Which and then transfer it backwards to A, which we target? get that Which target? target Zulu, target Zulu. Correct. जुलू सर जुलू और So, स्टार में जाएंगे। so basically, Zulu is the bad guy in this question. पूछा नहीं गया, but Zulu is the bad guy. Agreed? Yes. That means अगर मैं ज्यादा ऑल्टर करूं स्टारबर्ड को जुलू के लिए, तो यांकी तो और बाहर चला जाएगा। यांकी इज द गुड गाय। Agreed? Yes, sir. Okay. So since Zulu is the bad guy, so I draw a tangent for Zulu. All right. So draw a tangent for Zulu. All this as point N. Transfer PN backward through which point? A. Sir, A. So transfer it backward through A. Okay. Speed is the same. So distance as WO1 or WO, same thing. Cut an arc.
Call the point as O2. Join WO2. Then new course is WO2. Measure WO2. ये आएगा 158. 160 आ रहा है. ठीक है, that's okay. That is water course 159 sir. ठीक है, that's fine. 36 degrees starboard. Now superimpose WO2 onto Yankee. You have to show that उसका CPA बाहर से जाएगा. Superimpose WO2 onto Yankee. Speed is the same. Join O2A. And transfer through P. And show it going बाहर से. That's it. उसको यहीं पे. This finishes off your question. Now, since the question says ROR point of view, so you will have to write, I'm in rule 19. Delta 1, and then you quote the rule. Then you quote the rule. So rule कोट करना जरूरी है क्या सर? हाँ, because ROR लिखा हुआ है, तो इसलिए it's important. Because जहाँ पे जिस question में word ROR आ गया, इसका मतलब है कि question is wanting you to quote a rule. वो आपको hint दे रहा है question. Okay sir. So you have to quote that. Because basically, why are you altering to starboard? Why are you not altering to port? Question ये था. So you could have altered to port also. Why are you not doing that? So वो वाली बात आती है. Alright, let me know when to start summarizing the whole question. Just summarize the whole thing once again. Sir, is 155 okay, sir? Yeah, that's okay. That's fine. Perfectly fine. Okay, sir. So shall I summarize the whole question? Yes. Okay. So we are at Charlie in RV and we are heading 122 like this. I've got 3 targets. I've got a buoy X-ray on my port side, which is coming down like this. I've got a target Yankee, which is crossing me starboard to port, and it is going to pass far ahead of me. And I've got another target Zulu, which is coming in like this. And with this guy, I've got a collision course, CPA 0. So quite obviously, this guy is my bad guy. But nevertheless, we don't start altering so that the master waits for the buoy to become a beam of us. That's what we normally do. If there's any obstruction on my port side, then we try to clear the buoy.
So the boy, he becomes a beam. So he becomes a beam at 3:32. So we wait for the boy to become a beam. Once the boy is a beam, at that time, Yankee is at Papa. He's ahead of me. Zulu at that point in time is at Papa here. He's come closer to me. Now I start altering course to starboard. So first alteration is 140. But that CPA is not good enough. So therefore, a larger alteration is required. So 158, larger alteration to starboard is required. And now the target is going to pass ahead of me by a CPA of 1 mile. That's what the whole question is all about. And Yankee, in any case, was already ahead of me, was already more than 1 mile off. So in any case, वो और clear हो जाता. So is the question okay with everybody? Yes, sir. Okay. अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे ट्विस्ट करता हूँ? सपोजिंग मैंने क्वेश्चन में लिखा होता when boy X bears 090, when boy X-ray bears 090, तो क्या करता मैं? 32 डिग्री ले लेते हैं हाँ जी, अपने हेड से 32 डिग्री पोर्ट में आके वहां पे वे लाइन खींचते और जब वो अप्रोच लाइन उसको क्रॉस करती तो वो पॉइंट भी ले लेते हैं अपने हेड से. What do you mean by अपने हेड? मतलब 090 के बेरिंग पे जब वो आएगा हम ऑलरेडी 122 हेड कर रहे हैं तो हमारे मतलब हमें 32 डिग्री पोर्ट पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. वो तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है. सर वो 090 बेरिंग 2 दिए ना सर, 2 दिया तो 090 मारेंगे सीधा सर. बस जहाँ कटता है वो पॉइंट पे सीधा मारना. प्लीज मतलब 32 डिग्री आएगा. नहीं, चार्ली से 090 लाइन मार दो. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. समझ में आया? ये बन गया पॉइंट Q. Have you understood this? Yes, sir. He says when boy X-ray is bearing 090. So boy X-ray is bearing 090 at Q. Now you find time at Q and then you proceed. Then the rest of the thing you know. Is that okay? Yes, sir. All right. Similarly, the variation can be when boy X-ray bears due east. ये हो जाएगा. Same story. ठीक है? Is that okay? When boy X-ray bears due west. 0902 बोलेगा तो ऐसा होगा. अगर 090 relatively बोलेगा तो फिर same relevant. हाँ, relative नहीं बोलेगा कभी भी. हमेशा true bearings true ही देंगे इसमें ज़्यादातर. और अगर फिर कुछ भी नहीं दिया होगा तो we will consider all the bearings true. So then it will be, you can assume it is bearing true. You can cross check and ask them के doubt कि sir ये please clarify. But generally assume it is 0 true and then proceed ahead. ठीक है? सर जिस भी क्वेश्चन में बॉय दिया होगा और कोई करंट नहीं मेंशन होगा तो W और A तो हमेशा सुपर इम्पोज ही करेंगे ना. हाँ, करेक्ट. हाँ, राइट. इसमें और भी चीजें थी वो मैंने अब आपसे नहीं पूछी. इसमें कोर्स एंड स्पीड ओवर ग्राउंड वो मैंने आपसे नहीं पूछा. रिवर्स AO फॉर विच टारगेट? X-ray. For boy. For the stationary target for boy. वो चीजें मैंने वो सब हटा दिया है. मतलब that is a part of the question but I am removing all that.
तो सर इसमें जैसे सेट एंड ड्रिफ्ट अगर पूछ लिया होगा उन्होंने तो कैसे निकालेंगे हम? AW 0 ओके सर। 0 उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा इसमें दैट मींस WO का कोर्स की ऑल्टर कुछ और देगा फिर वैल्यू, ताकि वो AW की कुछ वैल्यू आए, ताकि मैं उसका सेट एंड ड्रिफ्ट निकालूं। ट्रायंगल बनेगा ना? जब ट्रायंगल बनना चाहिए उसमें मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तब मैं कर सकता हूँ। ओके सर। ठीक है। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? इसका फाइनल आंसर फाइनल कोर्स मैंने दे दिया ना, 158 alteration of course 36 degrees to starboard. Okay. All right. Next time sir, like DG question में sir floating question कितने मिनट्स में कर लेना चाहिए सर हमको? 25 मिनट। ओके 25 मिनट सर में हो जाएगा। अगर ओके सर, अगर 25 अगर 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 सिंगल टारगेट है तो यू शुड बी एबल टू फिनिश इट इन 20 मिनट्स, अगर सिंगल टारगेट है, और अगर 2 या 3 टारगेट हैं तो 25 मिनट। जनरली 2 टारगेट आते हैं, जनरली 2 आते हैं, बट 3 भी आए हुए हैं, सो प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। 3 टारगेट्स में एक बॉय होता है। 3 टारगेट में एक बॉय होगा, 3 टारगेट में एक बॉय होगा। And sir, one more question sir, जो सेट एंड ड्रिफ्ट या COG वाला क्वेश्चन होगा उसमें हमें स्टेशनरी टारगेट दिया ही होगा सर, दैट इज क्वेश्चन। मतलब समझा नहीं मैं। इन केस सर हमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड सेट एंड ड्रिफ्ट या फिर COG फीड थ्रू वाटर, तो हमें एक स्टेशनरी टारगेट दिया होगा। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। स्टेशनरी सेट ये चीज हमें स्टेशनरी से मिलेगी। सेट रेट COG SOG I can only find out if you give me one stationary target, then only can I find out. Okay sir. Otherwise I can't find it. So sir, AO is the COG and SOG in this case for X-ray. Correct. Absolutely right.